Hi friends, welcome to our channel Study Circle Professional. So we are discussing SBIL, that is setting up of business for CS executive students. पूरा पेपर हम क्वेश्चन पेपर को इन डेप्थ डिस्कस कर रहे हैं. In our last video we have discussed part A. Part A हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था, है ना. इस वीडियो से हम स्टार्ट करें पार्ट 2, दैट इज बेसिकली योर लेबर लॉज. लेबर लॉज को हम डिस्कस करें पार्ट 2, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है. 40 मार्क्स का आपका ये पार्ट 2 आता है, जहां पे क्वेश्चन नंबर 5 इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ऑप्शंस मिलेंगे. राइट. सो जैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होता है तो आप यहाँ पे बहुत बड़ा ये स्टोरी देखोगे. बच्चों, स्टोरी को पूरा इग्नोर करना है. इवन इफ यू डोंट रीड द स्टोरी, आप क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे. जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हो, डिफाइन द टर्म इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इन द लाइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. तो दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, इसके लिए आपको स्टोरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. तो अगर मैं इसका आंसर बोलूं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बताना है रिगार्डिंग इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, विच इज आर्टिकल नंबर 39. यहाँ पे आपको आर्टिकल नंबर 39 डिस्कस करना है. रिक्वायर्स द स्टेट इन पर्टिकुलर टू डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग दैट all the citizens irrespective of sex equally have right to an adequate means of livelihood. That ownership and control of all material resources of community are so distributed as the best to subserve the common good. That operation of economic system does not result in concentration of wealth and means of production to the common detriment. That there is equal work for both men and women. That the health and strength of workers, men and women, and tender age of children are not abused, and that citizens are not forced by economic necessity to enter into vocations unsuited to their age or strength. That children are given opportunities and health to develop in a healthy manner and in condition of freedom and dignity, and that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment. बस ये इतना आंसर आपको लिखना है. Let's go to question number 2, which talks about in the above situation if some workers are on contractual employment, do not get regular employment and are retrenched by the company, how will they get facility? How will they be facilitated under Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana? This is labor law chapter number 2. So अगर हम यहाँ पे देखें, here you have to write only this 3 points. 3 points कौन से? ये वाले पॉइंट. 3 पॉइंट्स कौन से? ये वाले 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं. अंडर अटल बिमित व्यक्ति कल्याण योजना, अ वर्कर ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर हु लूजेस हिज जॉब गेट्स फाइनेंशियल एड फ्रॉम द गवर्नमेंट. उसको फाइनेंशियल एड मिलती है कहाँ से? गवर्नमेंट से. दिस type of unemployment, this is a type of unemployment allowance, the benefit of which is admissible to the workers covered under ESI scheme. In a case of job loss, a worker will get benefit under Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana. At the time of retrenchment, a worker would be provided 15 days wages for reskilling. The wages would be credited directly in his bank account of the worker as to enable him to learn new skills. That's it. इतना ही आपको यहाँ पे अटल बिमित व्यक्ति कल्याण योजना के बारे में लिखना है. डिस्कस द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3, जो बोलता है डिस्कस द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर. हियर यू हैव टू राइट ओनली एंड ओनली दिस मच. सेक्शन 10 है ना. सेक्शन 10 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट. क्या लिखना है आपको? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर. According to section 10, appropriate government may, after consultation with central board, as the case may be, state board prohibit by notification in official gazette employment of contract labor in any process, operation or other work in any establishment. Section 10 vests overriding power in appropriate government irrespective of anything contained in the act. Section 10 के पास overriding power होता है. But before issuing any notification in relation to an establishment, appropriate government has have regard to conditions of work and benefits provided for contract labor and establishment and other relevant factors such as whether the process, यानी कि ये जो 1, 2, 3, 4 points है, this 4 points you have to write. Whether the process, operation or other work is incidental or necessary for the industry, trade, business, manufacture or occupation that is carried on in an establishment. Whether it is of perennial nature, that is to say, it is so sufficient duration having regard to nature of industry, trade, business, manufacture or occupation carried on in that establishment. Whether it is ordinarily through regular workmen
ordinarily through regular workmen in an establishment or in establishment similar thereto, whether it is sufficient to employ considerable number of whole-time workmen. So these are the reasons which you have to write. Section 10 यहाँ पे आपको लिखना है. Next अगर हम जाए, Rajesh and other contractual workers decided to go on strike. However, company is in public utility service. Describe the prohibition of strikes and lockouts in public utility service. Here you have to discuss about a strike which is done by public utility service. So here we have to write about prohibition of strike and lockout in public utility service. So the above mentioned restriction on strike and lockout are available. अच्छा, पहले तो एक जनरल रेस्ट्रिक्शन है जो सबको देखना है, जनरल रेस्ट्रिक्शन ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट है ना, जनरल रेस्ट्रिक्शन जो सबको देखने, वेदर यू आर पब्लिक यूटिलिटी और नॉट. सो दिस आर जनरल रेस्ट्रिक्शन. बट अगर हम बात करें पब्लिक यूटिलिटी सर्विस की, सो दे हैव टू फॉलो फ्यू एडिशनल रूल्स, है ना. तो अबव मेंशन रेस्ट्रिक्शंस, ये वाले जो रेस्ट्रिक्शंस है ये तो सभी को देखने ही है. बट अगर आप पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में हो, देन यू हैव टू see this also. Section 22 provides for following additional safeguards for smooth and uninterrupted running of public utility service and to obviate the possibility of inconvenience to general public or society. क्योंकि पब्लिक यूटिलिटी सर्विस सारी पब्लिक को अफेक्ट करती है, इसीलिए वहां पे ये वाले रेस्ट्रिक्शन, एडिशनल रेस्ट्रिक्शन डाले गए. और ये एडिशनल रेस्ट्रिक्शन में आप ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 this 6 point you have to write फॉर पब्लिक यूटिलिटी है ना. तो क्या लिखोगे आप? नो पर्सन एम्प्लॉयड इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस शैल गो ऑन स्ट्राइक इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. यानी कि अगर आपको पब्लिक यूटिलिटी स्ट्राइक करना है तो आपको इतने दिन पहले क्या देना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा, है ना. तो एक बार अगर आप ये स्क्रीन पे रीड कर पा रहे हो, सो यू हैव टू राइट दिस आंसर. जस्ट अ सेकेंड, ये वाला आंसर ना मैं आपको एक बहुत ही अच्छे से अगर मैं आपको ये आंसर बताऊँ, so just give me 2 minutes. Just give me 2 minutes. मैं आपको ये पूरा आंसर एक बार अच्छे से बता देती हूँ, so that you can read on the screen. तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं. नो पर्सन एम्प्लॉयड इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस शैल गो ऑन स्ट्राइक इन द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट गिविंग एम्प्लॉयर नोटिस ऑफ स्ट्राइक within 6 weeks before striking, that is date of notice. This point and this all relevant points you have to write, है ना. This is common point for strike as well as lockout. कि आप अगर स्ट्राइक पे जा रहे हो, आपको नोटिस देना है कुछ टाइम पहले का, है ना. फिर आपको ये भी देखना है, द notice of lockout or strike under this section shall not necessarily when there is already an existence of strike on lockout. So point number 3, point number 4, 5, 6, this you have to write. So we'll meet in our next video जहाँ पे we are going to discuss about the last question of SBIL, that is question number 6A, that is question number 6 plus 6A, है ना. So this we are going to discuss, which is an optional question. चलो, bye.